You showed me how to live love, so tell me what you're thinking Hey, what is up internet? Welcome back to the channel and today I'm going to talk about something जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, at least in the last couple of weeks. Yes, I'm talking about the Oppo Enco Buds. Now ये अभी इंडिया में लॉन्च हुए हैं for a price of ₹1799 only, and these, okay, let me say it right away. These are my favorite budget true wireless earphones. Let me talk more about it. Now I'll talk about all the good things in a bit, but one of the unusual things with the Oppo Enco Buds is कि इसके बॉक्स में आपको कोई भी चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलती है. Now I'm not sure if it's a big deal for you. मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं थी because I have never used a charging cable that usually comes inside the box of these true wireless earphones. अगर उसमें USB-C होता है तो मैं usually अपने फ़ोन का चार्जर यूज़ कर लेता हूँ. And the good thing is इसके केस में भी आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, so you can use your phone's charging cable as well. And talking about this case for a second, मुझे काफ़ी सही लगा. ये again very pocketable है and also it has that pill shaped design, and this might be again one of the contenders of the smallest true wireless earphones case ever. ये आपकी वो useless pocket होती है जीन्स की, उसमें आराम से फिट आ जाएगा. And I also like the hinge on this one. It's not very weak. It feels super premium. और also जो click है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे. नाउ केस के ऊपर थोड़ी सी आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और सामने की तरफ एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है जो आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन देगा. नाउ ऑल्दो ये केस कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बट जो उसमें बैटरी लाइफ है वो मुझे काफ़ी सही लगी. ना ओप्पो क्लेम करता है कि आपको सिंगल चार्ज में ईयरबड से 6 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ मिल जाएगी अगर आप उनको 50% वॉल्यूम में सुनते हो, और इन टोटल यू कैन गेट अबाउट 24 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ विद दिस केस. नाउ मेरे यूज में मैं बोलूँगा मुझे कहीं ना कहीं 5 आवर्स या 5.5 आवर्स की बैटरी लाइफ मिली थी, बट मैं इनको यूजुअली 60 to 70% वॉल्यूम में सुन रहा था. बट अगेन दिस इज सम ग्रेट बैटरी लाइफ फॉर अ बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स. ओके, सो व्हेन यू ओपन अप द केस यू विल फाइंड द ईयरबड्स ऑफ कोर्स नाइसली सिटिंग देयर, एंड ऑल्सो दे विल नॉट फॉल ऑफ द केस एक्सीडेंटली बिकॉज जो इसके मैग्नेट्स हैं वो भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे. एंड इट्स बीन अ वाइल आई हैव यूज्ड दिस राउंडेड ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स. ओवर द पास्ट 6 months मैं यूजुअली वो स्टेम लाइक जो होते हैं डिज़ाइन, जो एप्पल एयरपॉड्स वाला डिज़ाइन होता है, वही यूज़ कर रहा था. बट आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द ओप्पो एनको बड्स, एंड मेनली बिकॉज हाउ दे सिट इन साइड योर ईयर्स. आई मीन लुक एट देम, दे जस्ट सिट इन साइड एंड यू कैन लिटरली फॉरगेट अबाउट देम. दे आर सुपर लाइट. इनफैक्ट जो इसका फिट है वो मुझे ओरिजिनल गैलेक्सी बड्स की याद दिलाता है. सो दे आर सुपर कंफर्टेबल. ऑल्दो आई विश ओप्पो इसका कोई ब्लैक वेरिएंट या और कोई कलर वेरिएंट में निकालता, बिकॉज राइट नाउ दीज आर ओनली अवेलेबल इन वाइट. ऑल्सो मेरे को रात को ना ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुनने की काफ़ी आदत है, एंड दीज आर वन ऑफ द ओनली ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आउट देयर जिसमें अगर आप ऐसे साइडवेज भी लेटते हो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती. आई एम नॉट श्योर इफ एवरीवन डज दैट, बट या. एंड दैट्स नॉट इट. इसमें आपको IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, सो आप इसको आराम से अपने वर्कआउट या रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. एंड बिकॉज इसमें वो सिलिकॉन ईयर टिप्स वाला डिज़ाइन है, ये बिल्कुल भी आपके कान से गिरेंगे नहीं. सो यू बेसिकली डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू नॉट वर्कआउट और टू नॉट कंप्लीट दैट लास्ट सेट ऑफ पुशअप्स यू हैव बीन ऑलवेज नॉट वांटिंग टू डू. ओके, maybe bad joke. Now, connectivity is something where Oppo has not compromised at all. In fact, they have gone above and beyond, और इसमें आपको Bluetooth 5.2 मिलता है, which is very rare even in flagship true wireless earbuds. And I can vouch for that because जब भी मैं इन earphones को अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ पेयर कर रहा था मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ. So as soon as you open this case up, ये automatically pairing mode में चले जाएंगे और they will just connect to the last pair device. Now unfortunately इसमें कोई dedicated pairing button नहीं है इसके केस में, but if you want to take them to the pairing mode, all you have to do is tap and hold for 4 seconds on either of the earbuds and the earphones will go to the pairing mode. Now एक चीज़ जो मैं यहाँ mention करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी मैं इन earphones को अपने Windows लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहा था,
कभी कभार, नॉट वेरी ऑफन, बट कभी कभार एक बड़ी अजीब सी एक ग्लिची साउंड आती थी. नाउ इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन, बट इट वॉज नॉट वेरी ऑफन कि मैं इतना बॉदर हूँ, बट आई स्टिल थॉट आई शुड मेंशन दैट. बट दैट असाइड, इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है. सो अगर आप गेमिंग के लिए ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लेने का सोच रहे हो, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर देम. नाउ ऑल यू हैव टू डू टू गो टू द गेमिंग मोड actually is just triple tap on either of the earbuds and you'll get an audio feedback. And apart from that, you can also play pause, skip to the next track, and also control volumes from the touch controls. But by default आप इसके touch control से voice assistant control नहीं कर सकते हो. But thankfully these do support the Hey Melody app. तो अगर आपके पास कोई भी Android phone है apart from Oppo, you can download the Hey Melody app और उससे आप कोई भी touch control को voice assistant assign कर सकते हो. And now that we have done that, hey Google, play some music. Okay, let's talk about the sound. Now, Oppo Enco Buds में आपको 8mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, and they also support codecs like AAC and SBC. Again, something to look for if you're planning to use this with your iPhone. They also support Dolby Atmos, but that aside, how do these actually sound? Now, I have to be honest with you guys, I have tried a bunch of true wireless earphones under rupees 2000 or 2500 for that matter in the past 6 months or so, but these sound amazing for the price, amazing for the money you are paying actually. Now if you are an audiophile, stay away from these because these are not for you, but if you're anyone apart from an audiophile, you will definitely like the sound quality on the Oppo Enco Buds. Now don't get me wrong, इसमें जो bass है वो definitely boosted है और इसका overall sound signature bass heavy ही लगा मुझे, but जो bass है वो काफ़ी punchy है and it has that oomph factor. Now what I'm trying to say is that when Oppo was tuning the Oppo Enco Buds, they had the masses in mind, and that's the reason जो इसके treble या highs भी हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, and they can get bright when needed. और जो मिड्स हैं वो मुझे डिसेंट लगे. सो इफ आई हैव टू सम अप द ओवरऑल साउंड प्रोफाइल, वो काफ़ी वी शेप्ड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका साउंड स्टेज भी है, ऑल्दो वो माइंड ब्लोइंग नहीं है, but it's still great for the price. Now in a nutshell, I would say Oppo knew what they were doing when they were tuning the Oppo Enco Buds, and they get a big thumbs up when it comes to sound quality. And in terms of microphone quality, this is how they will sound like if you are using them for calls or your Zoom meetings. And Oppo does claim कि उन्होंने कोई तो AI noise cancelling use किया है for calls, but you be the judge and let me know in the comment section below, what do you think of the microphone quality of the Oppo Enco Buds. Okay, let's talk about the verdict now, and I'm not sure if you've already guessed, but let me answer the question for the unintended. Should you get the Oppo Enco Buds for a price of rupees 1799 rupees? Yes guys, आप इनको आँख बंद करके ले सकते हो. These are by far the most complete package you can get under rupees 2000 right now. Amazing battery life, decent touch controls as well, USB Type-C, really good design and really good sound quality as well. Now I know मैंने अभी तक Soundcore के R100 review नहीं करे हैं, and I've heard a lot of good things about them as well. So if you want me to compare the Oppo Enco Buds with the Soundcore R100, comment down below in this video and let me know so that I can make that video for you guys very soon. But till then, Oppo Enco Buds get a big thumbs up from me. So yes guys, this was my quick review of the Oppo Enco Buds. Let me know in the comment section below what do you think of this video. Share it with your friends who are thinking to buy a true wireless earphones under rupees 2000. This video might help them. And if you want to watch more such videos in future, subscribe to TQnet and especially hit that bell icon so that you get notified whenever I upload such videos in future as well. So yes guys, till then, keep asking and I will see you in the next one. Yo.